Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra, I'm preacher of Srimad Bhagavad Gita. Today I'm going to talk about one of the 28 type punishment of Garud Puran, which are mentioned in Garud Puran. But before I start my lecture, I would like to introduce Garud Puran. This is Garud Puran, and this is the best translation of Garud Puran in English. And I would have to say, we all have to read Garud Puran throughout our life, because by which we can understand many things. We can get a skill, we can grow the skill of administration, and many things which are mentioned in Garud Puran. Likewise, the molding of the diamond, the molding of the pearls, and also many general disorder treatments are also mentioned in Garud Puran, and by which we can understand about the life, and we can also develop a moral and values in our character. So we all have to read Garud Puran through our life, rather than to read a Garud Puran at the time of the death of a beloved person. So let's get into one of the 28 type punishment which is mentioned in Garud Puran. So this punishment name is Sukra Mukham. Sukra Mukham, crushed and tormented by the particular, crushed and tormented. The Sukra Mukham. Sukra Mukham, this is a punishment in which this is mentioned crushed. The particular person, the sinner, will be crushed and tormented. The rulers or administrator who neglect their duties and oppress their subject by misrule, like our beloved Prime Minister. The rulers who neglect their duties and oppress their subject by the misrule are punished in this hell. These kind of the people are punished in this hell, and they are crushed to pulp by heavy beating. एंड हैवी बीटिंग, उनको मतलब इतना मार मारा जाता है जब तक वो कॉन्शियस में से अनकॉन्शियस नहीं हो जाते, जब तक वो अनकॉन्शियस नहीं हो जाते, इतना मार मारा जाता है। एंड जब वो रिकवर करते मतलब कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, उसके बाद उनको फिर से इतना मार मारा जाता है। तो किन लोगों को इस प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है? जो लोग मिसरूल करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो पावर में होते हैं, जो अपने पावर का मिसयूज करते हैं, उन लोगों को इस प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है। जो अपने ड्यूटी नहीं अच्छे से निभाते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो अपने पावर का मिसयूज करके दूसरों लोगों को परेशान करते हैं, उस व्यक्ति को इस प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है। सो शुक्र मुखम, क्रश्ड एंड टॉर्मेंटेड, उनको इतनी हद तक उनको पीड़ा दी जाती है, मार मारा जाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। जब होश में आ जाते उसके बाद उनको फिर से मार मारा जाता है। वो इस प्रकार का रिपीटेशन चलता रहता है जब तक उनका टाइम अप नहीं होता है। सो दिस पनिशमेंट इज गिवन टू दिस ऑल पीपल। सो द मोरल ऑफ दिस पनिशमेंट इज द पर्सन हु इज इन पावर, द पर्सन हु इज इन अ रूलिंग पावर, दिस पर्सन मस्ट हैव टू परफॉर्म हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, otherwise this person will surely entitled Shukra Mukhama punishment, which is mentioned in Garud Puran. I hope you all can understand. If you are having any questions, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe.